Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with the derivative and technical update. On technical front, yesterday we see Nifty traded in a sideways range and managed to close on flattish or positive note, kind of slightly positive note. Yesterday, index has a form of doji candlestick pattern which suggests indecisiveness. So we maintain a range bound view for this week within the 18,400 to 18,800 levels. So 18,400 should act as a crucial support for the Nifty. While Nifty can be expected 18,800 levels, resistance levels. If we see on the sectorial front, yesterday technology and telecom space witnessed a rally more than a 2%, while on the majority sectorial index was like sideways to positive momentum. Uh, any correction can be viewed as a buying opportunity. On the Bank Nifty front, Bank Nifty too traded sideways yesterday, but if we see slightly weaker than Nifty, Bank Nifty look now. So last few weeks, if we witness, so index continues traded within a broader range of 43,500 and 44,500 levels. So these levels are the important levels. So 43,500 will act as a support levels and 44,500 will act as a resistance level. So now we should wait and watch strategy. So there are a probability of breakout or breakdown on the either side is higher. But overall, our view for the is remains bullish. So any stock specific long should be added on a corrective phase. On the derivative front, if we see Nifty future OI saw yesterday short covering around minus 5.01%. So reduction of 0.55 million shares and total outstanding position currently at 10.35 million shares. PCR saw uptick. Yesterday close was a 0.92 and if it compared to previous closing is a 0.84. Major addition happened in the call option front at 18,700 and 18,800 strikes, which saw addition of OI around 14.21 million shares and 84.94 million shares. On the put option front, major addition were seen in 18,600 and 18,500 strike. Saw addition more than 94.35 million and 68.22 million shares each. On the Bank Nifty front, Bank Nifty PCR almost like flat given a close. Yesterday close is a 0.78 and if we compare to previous day closing is a 0.77. So Bank Nifty future OI indicates that there was a short build-up seen in the index. So OI addition by 3.48%. So that is 0.09 million shares. On addition, major addition happened in call option front in Bank Nifty to 44,000 strike. So addition OI around 57.9 million shares and put option front also major addition were seen in the 44,000 strikes. Addition is more than 48.19 million shares each. If we see on the FII data, so FII added a longs around 10,481. So net short by 2099. So overall net short long short ratio is 49.29%. On the cash segment, FII sold 626.62 crore and EI bought around 1,793.85 crore. Long buildup we have seen Manappuram Dixon and short buildup we are witnessing SRF, Navin Floro and Astral. So that's it from my end. I will hand over to Devang sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you, Kshitija. Good morning, all. So, a couple of fundamental news from my end. First is on Z. So, SEBI has barred the company's Chief Executive Officer Puneet Goenka and SL Group Chairman Subhash Chandra from holding positions of a director or a key managerial position in company's board. So, we believe this, is negative development for Z. First of all, Puneet Goenka was the whole and soul of Z. Secondly, one of the preconditions in merger was that, Puneet Goenka will be the CEO post the merger. So this also puts the merger in jeopardy, and this does not bode well for the company. The only caveat is that, if these two people approach the board or they approach the court to, restrict SEBI's order.
Another development in Ahluwalia contracts is that the company has received an order worth of 427 crores for construction of building a Aero City. Till date, the order inflow is strong at 4,178 crores and guidance is 6,000 crores. So there is a consistent order win and it bodes well for Ahluwalia, and we have a positive view with a target price of 697. Um, in terms of Hero MotoCorp, so we attended the analyst meet and the key highlights were that the company aims to recover the market share in 125cc motorcycle, increase the market share in scooter on the back of new launches, and by increasing customer experience by opening 500 plus exclusive stores over the next 8 quarters. Also, the company wants to double its accessories, parts, and merchandise revenues from 5,000 crores to 10,000 crores. The company wants to build portfolio in upper premium area. It is the fastest growing area, and also planning to launch premium motorcycle model in 150 to 450cc. This will elevate the retail buying experience, and management indicated that they will open 100 plus exclusive stores in next 4 quarters. The company is also focusing on EV and these premium segments. So the outlook for demand is positive. We have a hold rating on the stock. In terms of Inox Wind Energy, the company will merge its parent Inox Wind via share swap ratio. The entire aim of this share swap is to simplify the holding structure of the group. So for every 10 shares of Inox Wind Energy, 158 shares of Inox Wind will be issued. In terms of Adani Ports and SEZ, so the company has suspended vessel operations in Mundra and Tuna Port in light of an advisory issued by the because of the cyclone. Uh, In terms of PC Jewelers, the state and PC Jewelers has filed a suit against State Bank of India in district court uh, in New Delhi for declaration and injunction, and requested to declare the action of the lender of classifying its loan account as NPA as illegal and void. So basically PC Jewelers wants to reclassify itself from non-performing to a performing asset. In terms of JSW Steel, the Director of Mines and Genealogy have granted a mining lease for iron ore minerals. So total, the minerals of 9.77 million metric tons of resources were issued, and this bodes well for JSW Steel. In terms of HDFC Bank, the shareholders have voted for Kaizad Barucha as Deputy Managing Director and Bhavesh Javeri as Executive Director. Ramkrishna Forging, the company incorporated Ramkrishna Titagarh Rail Wheels and along with Titagarh Rail System. So both will hold 50% stake in the Ramkrishna Titagarh Rail. So this bodes well for Ramkrishna Forging. Engineers India has received an order from ONGC worth 472 crores. So this is a positive development for Engineers India. HFCL has won an order worth 80.92 crores from Delhi Metro Corporation. So for fiber optic transmission system. So this bodes well for HFCL. Lastly on SJVN. So SJVN Green Energy has bagged 200 megawatt wind power project on build, own and operate basis from Solar Energy Corporation of India. So this bodes well for SJVN. That's it from my end. Over to you, Bridges. Good morning, everyone. So, few more news updates from my end. So, start with the inflation data. So, the retail inflation rate has dropped for the fourth month in a row in May, falling to 4.25% from 4.70% in April. This is according to the data released with the Ministry of Statistics and Program Implementation on June 12. At 4.25%, the consumer price index inflation for the May is the lowest in 25 months and is below census estimate of 4.4%. Next is on Tejas network. The wireline and wireless networking product or maker has developed its TJ1400 family of carrier-less fiber to the X FTTX and packet switching network, a solution to deliver the high-speed fiber connectivity service to the business across the country for the Tata Tele Business Services. So this may be a little bit of positive.
Next is on Greaves Cotton. So Greaves Cotton Mobility has entered into an agreement with Bike Bazaar Finance. Under the agreement, Bike Bazaar Finance will finance Greaves Electric Mobility ELE brand L3 electric vehicles. This partnership will initially take effect in UP and Bihar, and then they have a plan to expand it nationwide in the near future. Punjab and Sindh Bank, the bank has received board approval for raising capital of rupees 750 crores through the issuance of base 3 compliant additional tier 1 or tier 2 bonds in one or more tranches within a period of 12 months. Next is on TVS Motor. Shares of the company has jumped 2% in the early trade yesterday after its subsidiary has acquired 25% stake in Swiss Mobility Holding AG, and also known as a SCMG. So SCMG is a e-bike platform covering B2B and B2C business involving sales of own branded e-bikes, and it's a subsidiary of TVS Motor Singapore Pte Limited. Maharashtra Seamless has a surge of 5% in the morning trade in yesterday's session, and it's hit the 52-week high of rupees 498 after the DP Jindal Group company said it was debt free and it has prepaid loan of rupees 234 crores. The company funded the payment from its internal accruals, given its high order book and strong liquidity positions. The Maharashtra Seamless, this has been said in the exchange filing. The question shipyard, the share price of the company has gained 6% in the early trade in June 12, after the company backed a project for the Defense Ministry. The company has been declared as a L1 by the Indian Navy for MR mid-life upgrade of an Indian naval ship. The final contract will be executed in due course. The estimated contract value is around rupees 300 crores, and the estimated duration is around 24 months. Next is on HDFC Limited. The home loan financer has raised over rupees 13,000 crores through 10 years bond at 7.75% ahead of its merger with the largest private lender, HDFC Bank. Next is on Go Fashion. The Sequoia Capital has sold its entire 10.18% stake in Go Fashion India to the bulk deal on Monday. Meanwhile, two domestic institutional investors, PNP Paribas and the arbitrage ICICI Pru Life Insurance and two other foreign investors, Solicitor General and the Kuwait Investment Authority, for now lapped up the shares through open market transactions. So, and there is one more update on Caplin Point. The Caplin Point has received approval from the US FDA for the bisalate injection. So Tata Motors has one more update. So Tata Motors own Jaguar Land Rover plans an annual investment of rupees 3 billion pounds, while targeting revenue of rupees 30 billion pounds by FY26. So this is known by one of the investor presentation by the company. So that's all from and I hand over to Hitendra for more Hindi updates. Thank you. थैंक यू सर गुड मॉर्निंग एवरीवन हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं स्टार्ट करते हैं कोचिंग से पढ़ाई के न्यूज़ के साथ कंपनी को L1 बड़ा डिक्लेयर किया गया इंडियन नेवी से जो कि बर्ड लाइफ अपग्रेडेशंस करेंगे इंडियन नेवी के लिए बेसिकली दिखाया गया 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और अगले 24 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा सेकेंडली देखेंगे एचडीएफसी होम लोन फाइनेंसर जो है उन्होंने 30,000 करोड़ रेज किए 10 ईयर बॉन्ड्स के तो 7.75 के कूपन के साथ और उसमें प्राइवेट लेंडर बन जाएंगे एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र सीमलेस में महाराष्ट्र सीमलेस ने कहा कि जो डीपी जनरल ग्रुप की कंपनी उन्होंने अपने जो लोन्स है वो प्रीपे कर दिया 234 करोड़ के आसपास के लोन्स है और वो डेट फ्री हो चुकी है। तो महाराष्ट्र सीमलेस एक्सचेंज में सेकेंड टाइम में 8 मंथ्स के अंदर उन्होंने अपने प्रीपेड लॉन्ग टर्म लोन्स चुका दिए। नेक्स्ट टीवीएस मोटर्स में भी देखा जाए तो उन्होंने स्टेक एक्वायर किया 25% स्विस ई-मोबिलिटी में जो कि स्विस बेस्ड कंपनी है और एशियन की ई बाइक प्लेटफॉर्म कवर करती B2B B2C सेगमेंट के लिए इसमें वो सेल करेंगे ब्रांडेड ई बाइक जो कि सबसे बड़ी रहेगी सिंगापुर बेस्ड की।
पंजाब एंड सिंध बैंक को भी बोर्ड अप्रूवल मिल गया, जो कि फंड रेज करेंगे 750 करोड़ के आसपास का बेसिस है, और इसे भी कंप्लाइंट बॉन्ड से मिलेगा, टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड का ट्रांस देगा 12 मंथ्स के अंदर। ग्रीस कॉटन की जो है कंपनी ग्रीस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया पाइप बजाज फाइनेंस के साथ। अंडर दिस एग्रीमेंट उन्होंने ये फाइनेंस करेंगे मोबिलिटी ये भी L3 व्हीकल्स के साथ, और पार्टनरशिप इनिशियली इफेक्ट रहेगा यूपी और बिहार में, जो कि एक्सपैंड करेंगे नेशन वाइड। टीजीएस नेटवर्क्स ने भी अपने नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मेकर जो डिप्लॉय किया टीजी 1400 फैमिली के लिए, जो एफटीटीएक्स और पैकेट सर्विसेज और वीकेंड स्विचिंग के लिए यूज किया जाएगा, और बेसिकली टाटा टेक बिजनेस सर्विस के जरिए ये एक्सपांड किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है इकोनॉमी के ऊपर। कल हमने देखा है आईआईपी और सीपीआई के डेटा है। अगर हम डेटा वाइज देखें तो जो सीपीआई है वो की 4.25%, जो कि 4.7 के एवरेज है, और हम देख रहे हैं 25 महीने के लो पे आ गया, और बेसिकली हम देख रहे हैं आगे कि जो बेसिक बेस रेट है 4%, उसके पास हम आते हुए देख रहे हैं, और ये ओवरऑल भी सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट है जी एंटरटेनमेंट के लिए सेबी ने जो उनके सीईओ है प्योरमित गोइंका और जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन शहबाज शहर, उन दोनों को बैन किया गया है मैनेजरियल पोजीशन कंपनी में लेने के लिए। सो ओवरऑल ये इम्पैक्ट कर सकता है जी सोनी मर्जर में, क्योंकि मर्जर में नहीं बस पूरे गोइंका जो थे वो जो मर्ज एंटिटी के सीईओ बनना चाहेंगे। सो ओवरऑल ये नेगेटिविटी न्यूज़ हो सकती है कंपनी के लिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अनुमूलक कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ऑर्डर मिला है 427 करोड़ का, जो कि बिल्डिंग वो बनाएंगे यूरो सिटी में, और देखा जाए तो 4170 करोड़ का ऑर्डर उनको मिल चुका है, और गाइडेंस का 6000 करोड़ का है। ऑर्डर इनकी कंसिस्टेंट इनके जो व्यू के साथ ही चल रहा है, और प्राइस टारगेट 697 का। हीरो मोटो को आपकी कुछ एनालिस्ट में उन्होंने कहा कि वो अपना जो रिकवर करना चाहते हैं मार्केट शेयर 125 सीसी सेगमेंट में, जो थोड़ा सा उन्होंने लूज कर दिया, और सेकंड स्कूटर मार्केट में भी वो कम बात करना चाहेंगे, नई लॉन्चेस लेके आ रहे हैं। तो और भी क्या है, अपने 500 एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन करेंगे अगले 8 महीने में, उनको टारगेट है 10,000 करोड़ का रेवेन्यू स्ट्रीम को बाय इंट्रोड्यूसिंग वो पार्ट्स और एक्सेसरीज और मोबाइलाइज करना चाहेंगे। रेवेन्यू इस बार देखा जाए FY20 में 5,000 करोड़ का रहेगा, जो कि प्रीमियम सेगमेंट से वो जुटाना चाहेंगे। कंपनी ने ये भी कहा कि वो बड़ी कर रहे हैं अपर प्रीमियम एरिया, जहाँ पर फास्टर ग्रोथ दिख रही है। प्रीमियम मोटरसाइकिल जो कि 150 से 450 सीसी में है, और वो अगले क्वार्टर 23-24 में वो करना चाहेंगे, और इसको एलिवेट करेंगे बाइंग एक्सपीरियंस से, जो कि मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया 100 नए स्टोर्स को ओपन करना चाहेंगे, जो कि प्रीमियम मोटरसाइकिल्स को ही केटर करती है। कंपनी का जो एम है फोकस ईवी बीड़ा में, उन्होंने कहा कि 100 सिटीज में अभी करेंटली अवेलेबल 100 सिटीज में करेंटली वो ले जाना चाहेंगे। करेंटली अभी 3 सिटीज में अवेलेबल है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो अपने कैपिटल एलोकेशन को इंक्रीज करेंगे ईवी और प्रीमियम सेगमेंट में। तो ओवरऑल डिमांड आउटलुक हमें जो है एनालिसिस से पॉजिटिव लग रहा है, तो हमारी कंपनी होल्ड रेटिंग है स्ट्रॉन्ग। आइनॉक्स विंड के भी आइनॉक्स विंड की जो पेरेंट है, उन्होंने शेयर स्वैप किया है 10 शेयर्स, और आइनॉक्स विंड एनर्जी तो 158 शेयर्स के हिसाब से उन्हें शेयर स्वैप डील हुई। अडानी पोर्ट्स ने ये कहा कि उनकी जो वेशल ऑपरेशन है मुंडा पोर्ट में, जो कि साइक्लोन चल रहा है उसके चलते उन्होंने इसे टेम्परेरी स्टॉप किया गया है। पीसी ज्वेलर ने एक सूट फाइल किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में। बेसिकली उनको जो रिक्वेस्ट किया जो कि लेंडर ने क्लासिफाई करा लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट को फ्रॉम जून 2021 से लेके अप्रैल 2024 की इलीगल नल और वॉइड है। टाटा मोटर्स ने कहा कि उन्होंने 111.94 मिलियन के एग्रीगेट प्रिंसिपल अमाउंट जो कि ईसीबी है बॉन्ड्स के जरिए, और 250 मिलियन 5.7 सीनियर लोन्स के जरिए उन्होंने बोरो किया गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील के डायरेक्टरेट ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर ऑफ माइंस से चली जो गोवा में उन्हें तो माइंस मिली है, और कंपनी ने वोट किया ग्रांट ब्लॉक 6 में, जो कि मिडल ब्लॉक है 9.76 मिलियन मीट्रिक टन की, और फाइनल ऑफर प्राइस देखा जाए 96.65% की रहेगी, और रिसीव किया ब्लॉक 9 की, जो कि 1619 जो 65.73 मिलियन टन की। HDFC बैंक को भी कहा कि उन्हें एक अप्रूवल मिल गया 99.7% वोट के साथ, जो कि काइजर भरूचा है वो कि अभी की जो करंटली पीएमडी रहेंगे, और बैंक को फिर सर्व करेंगे अगले 3 साल के लिए। स्टार्टिंग होगा अप्रैल 19 से, और 99.8% का वोट शेयर मिला है पावर शेयरिंग में, वो भी कंटिन्यू करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो बैंक अगले 3 साल के लिए फ्रॉम 19 अप्रैल पे। रामकृष्ण फोरम ने कहा कि कंपनी ने इंकॉर्पोरेट किया रामकृष्ण टिटागढ़ रेल व्हील्स उनके रेल सिस्टम के साथ, और ये रामकृष्ण टिटागढ़ रेल तो मैन्युफैक्चर और सप्लाई के लिए फोर्स विच कंपनी बोथ कंपनी ने 50% स्टेक होल्ड करेगी।
इंजीनियर इंडिया में ओएनजीसी ने एक अवार्ड दिया प्रोजेक्ट 472 करोड़ का ऑर्डर इंक्लूड करता है रिप्लेसमेंट इंक्लूडेड 3 सीएसओ ऑफ गैस कंप्रेसर रहेंगे और 6 जनरेशन गैस कंप्रेसर। तो प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है सीबीडी वेसल जो कि ओरल प्लांट पे है और एक बीबीसी रीएमबर्सेबल बेसिस पे रहेगा। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को शेड्यूल किया है 40 महीने के लिए। HFCL ने एक ऑर्डर वॉन किया है 81 करोड़ के आसपास का दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी से। वो मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लाई, इंस्टॉल और टेस्ट कमीशन करेंगे फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन के लिए और 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर और फेज 4 दिल्ली मेट्रो के लिए रहेगा। SJVN ने कहा कि उन्हें 200 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो कि बिल्ड ओन BOT बेस पे बिल्ड ओन ऑपरेट और ट्रांसफर जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिला है। ये प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी इंडिया में एनीवेयर जहाँ पे EPC कॉन्ट्रैक्ट होता है। टेंटेटिव प्रोजेक्ट कॉस्ट हम देख रहे 1400 करोड़ का है और प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेशन हमें लग रहा है 7.8 लाख मीट्रिक टन का कार्बन एमिशंस रिड्यूस करता है। So that's it from my end. Thank you very much for the morning call. You may not disconnect.